Hello students, I hope your paper would have gone well. Uh, I would call the difficulty of the paper to be somewhere between moderate to tough. So basically there were students who felt who just came out of the examination and initially they felt the paper was easy, but as the recalls are happening now, they are realizing that it was not easy, it was kind of tricky. From the surgery perspective, I would say that the topics were pretty much the same that are asked every year, though the topics were not the routinely asked ones, they were the slightly lesser asked topics. So obviously, we do not expect students, who are reading 19 subjects to be very acquainted with these topics at first hand. But yes, they were the PYTs only, previously years asked topics, but the lesser asked ones. Okay. So that would be the first take from this paper. Once again, this paper has reinstated the fact that if you don't know the concepts, it's difficult to directly read something in the last few days and then get the questions right. ऐसा नहीं आपने image देखी और एकदम से आपको समझ में आ गया. Conceptual application is extremely important. That is what you need to know. So the level would be moderate, mainly image-based questions there, and will be the trend which is going to be followed over the years to come, right? From the perspective of distribution of the topics in surgery, we would say that the distribution was again atypical kind of distribution. The topics that were asked from general surgery, there were just 3 questions from general surgery. Again, these are the distribution that you see here is based on the immediate recall that has happened. As the recall evolves, there are more questions that will be added to the recall. Towards the end, I'll also be telling you about the questions that have been told by the students, but the exact recall could not be managed, right? So general surgery fetch around 3 questions. Breast se 1 question aaya tha beta. Thyroid and renal, we had 2 questions. ट्रॉमा एंड न्यूरोसर्जरी सरप्राइजिंगली न्यूरोसर्जरी से काफी सारे क्वेश्चंस थे इस बार 3 से 5 क्वेश्चंस ट्रॉमा एंड न्यूरोसर्जरी से थे जीआईटी से 4 क्वेश्चंस थे जीयूटी से 1 क्वेश्चन वैस्कुलर सर्जरी से 2 क्वेश्चंस एंड बर्न्स एंड प्लास्टिक से 1 रिकॉल अभी तक हो पाया है. So let's dive into the questions again. These are recall questions beta. These are not exact images. Images differ कर सकती हैं. Basic concept समझाने की आपको कोशिश करेंगे. That is what our attempt will be. So okay, starting from the first question. A patient presents with fingertip changes shown in the image. अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बेटा शायद ये इमेज नहीं थी सर, इमेज कुछ और थी. But nonetheless, basically what was given was there was a hand which was shown and there was 1 finger or 2 fingers which were shown to be black at the fingertip. There was venous congestion also visible. The hand was swollen, okay? And therefore, when you have some presentation which is exactly like this or wherein there is a swollen venous congestion that is visible with the blackening of the fingertips, this is what is characteristically wet gangrene. Okay, so this is your wet gangrene. अब कंफ्यूजन ये था, देयर वर सम स्टूडेंट्स हु सेड कि प्रोबेबली सर इसमें ना एक वाइटिंग ऐसा लग रहा था, एक फिंगर वाइट है. अब एक फिंगर वाइट है डजंट रियली मैटर. रीजन बीइंग अगर वीनस कंजेशन दिखा है हाथ के अंदर, हाथ अगर swollen है and you have blackening also visible at the tips, then it is wet gangrene. There is no confusion. एंड में आपको इस क्वेश्चन के हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना के भी इमेज दिखाएंगे तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ लिटिल अबाउट गैंग्रीन हियर. ओके, so what exactly is gangrene? Gangrene is the death of the tissue, basically macroscopic portions of the tissue die down and it appears black. Why it appears black? Because there is breakdown of hemoglobin in the blood which leads to the deposition of iron sulfide. So iron sulfide बनता है बेटा, तो क्या होता है, oxidize होकर it gives a black color. Usually distal part of the limb, तो आपको digits जो दिख रही थी black, and that is what is involved. गैंग्रीन को हम 2 तरह से पढ़ते हैं बेटा. वी नो इट्स अ ड्राई गैंग्रीन एंड अ वेट गैंग्रीन. तो ये वेट गैंग्रीन था. व्हाई? बिकॉज देयर वाज वीनस ब्लॉकेज, जो हम बोल रहे हैं वीनस कंजेशन या स्वेलिंग यहाँ दिख रही थी. अलोंग विद इट some students said there was some sort of infection which was visible, abscess दिख रही थी वहां पर. Some students said there was no abscess visible. So whatever it was, if there is venous congestion, venous blockade along with some superadded infection, that is wet gangrene. In dry gangrene, it's a gradual, slow process. There is desiccation of the tissues associated with atherosclerosis and Burgess disease. Now, line of demarcation पे आते हैं बेटा. This is again important. In line of demarcation point of view, we need to understand that line of demarcation is always well demarked or noted in cases of a dry gangrene as compared to a wet gangrene. तो आपको wet gangrene में बहुत अच्छी line of demarcation नहीं मिलती है. A little bit of discussion about the diabetic foot here as well. Along with what all features you're noticing here, there will be crepitus that is going to be visible in the diabetic foot because of the presence of gas forming organism. And remember, wherever crepitus is visible, it's a surgical emergency. आपको immediately debride करना है या amputate करना है.
लाइन ऑफ डिमार्केशन की हमने बात करी बेटा, इट इज मोर प्रॉक्सिमल इन द केसेस ऑफ वेट गैंग्रीन. होती किस में ज्यादा डिमार्क्ड है बेटा? इन ड्राई गैंग्रीन यू विल फाइंड द लाइन ऑफ डिमार्केशन टू बी वेरी वेल नोटेड. ठीक है. अगेन, if the bone gets involved in cases of dry gangrene, we need to have जब आप amputate करते हो conical stump छोड़ना है आपको, because the blood supply to the bone is still intact, so we don't dissect that off, we don't remove that off. Wet gangrene में, we have already discussed, there's infection and suppuration which extends into the neighboring tissue, and therefore the final line of demarcation is proximal as compared to the dry gangrene. ठीक है. तो ये आपको images देख के समझ में आ रहा है. देखा बेटा, इसमें look at the image here. यहाँ दिख रहा है आपको एक बेस पे एब्सेस जैसा दिख रहा है. देयर इज एन इन्फेक्शन दैट इज विजिबल हियर. दिस इज योर वेट गैंग्रीन. लुक एट द ड्राई गैंग्रीन. द लाइन ऑफ डिमार्केशन हियर इज कैरेक्टरिस्टिकली विजिबल. सेम हियर एज वेल. तो आपको वो लाइन दिखती है. नाउ अगर आपको वो रेनॉल्ड्स फिनोमेना का इमेज देगा तो कुछ ऐसी इमेज आपको दिखेगी बेटा. दिस इज हाउ यू विल बी फाइंडिंग द इमेज टू बी. कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई वीनस कंजेशन विजिबल नहीं होगा. द what you're looking at is the blanching that is visible or the white. So what is the sequence that we know beta? It is W, B and R. This is the sequence that is seen in cases of Raynaud's phenomena. The digits, it's an episodic digital spasm. तो क्या होता है? The digit goes white first because there's a spasm of both the arterioles as well as the venules. फिर क्या होता है बेटा? There is capillary dilatation. तो digit turns blue, and when there is final dilatation of the arterioles as well, you have the reddish appearance back again. ठीक है. तो WBR is the sequence that is noted in Raynaud's phenomenon. ठीक है. Raynaud's syndrome कब होता है बेटा? जब secondary Raynaud's होता है, that is called Raynaud's syndrome. Raynaud's syndrome से associated एक और important question क्या आता है? It is associated with the use of vibrating tools. It is also called as vibrating hand syndrome. Vibrating fingers या vibrating hand syndrome associated with use of heavy machineries. So this is all about the discussion about gangrene and Raynaud's syndrome. Next question देखते हैं बेटा. Again, अब इस question में भी we see that the image is not properly recalled here. अब there are some students who were saying sir कि उसमें ये stages mentioned नहीं थी. They were talking about the T staging, not this image. एक T staging पूछी हुई थी. अब we'll discuss the T and the main stages as well. अब उसमें जो भी दिया था, let us discuss first and then we'll come to the question image. TNM staging बेटा ब्रेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक कैंसर है जिसकी आपको TNM staging पता होनी चाहिए तो that is your breast cancer. Basically, what all you need to remember is the T4 stage. T1, T2, T3 बहुत simple है. Less than 2 or equivalent to 2 is T1. 2 से लेके 5 that is T2. More than 5 centimeters is T3. T4 में size usually doesn't matter. What matters is the involvement of the chest wall and the skin. T4A is when we talk about the chest wall involvement. अब chest wall involvement क्या होता है बेटा? Let's talk about the chest wall involvement. Chest wall involvement means three structures: serratus anterior, ribs and intercostal muscle. ये basically constitute करते हैं आपका chest wall involvement. But please remember, alone, अगर pectoral muscles अकेली involved है, बाकी सारे structure जो तीन mention किए involved नहीं है, that is not qualified as T4A. वो T4A नहीं होता है. ठीक है. अगली चीज आती है T4B. T4B मींस स्किन इन्वॉल्वमेंट. स्किन इन्वॉल्वमेंट तीन चीजें आती हैं बेटा: अल्सरेशन, इप्सिलैटरल मैक्रोस्कोपिक जो दिखते हैं वो सैटेलाइट नोड्यूल्स, एंड द थर्ड थिंग वी टॉक अबाउट इज पोदे ऑरेंज अपीयरेंस. अभी पोदे ऑरेंज कितना होना चाहिए बेटा? इट शुड बी कवरिंग लेस देन 1/3 ऑफ द ब्रेस्ट सर्फेस. ठीक है. 1/3 से कम होना चाहिए. 1/3 से अगर ज्यादा हो जाता है तो इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर, दैट इज T4D. अब बच्चों का ये कहना था सर यही क्वेश्चन पूछा हुआ था. देयर वाज रेडनेस और इरिथेमा, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, एंड पोदे ऑरेंज वाज प्रेजेंट ऑन द एंटायर ब्रेस्ट. सो इट वाज प्रोबेबली T4D. दैट इज व्हाट द स्टूडेंट्स टोल्ड मी. इफ इट वाज नॉट द केस, अगर इस तरह से नहीं था, इन्फ्लेमेटरी साइंस नहीं थे, मोर देन 1/3 ऑफ द POD नहीं प्रेजेंट था, तो दैट वाज नॉट T4D. इफ इट वाज ओनली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्किन, आपको अल्सरेशन मिल रहा था, then it was typically a T4B. तो क्या इमेज थी उसके बेसिस मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे आंसर मार्क करना है. Okay, moving ahead, आपको lymph node involvement भी पता होना चाहिए बेटा. N1 is when you have ipsilateral axillary level 1 and level 2 which are mobile lymph nodes. N2 क्या होता है? N2A and N2B दो तरह से पढ़ते हैं इसको बेटा. N2A में क्या होता है? Level 1 और level 2 axillary lymph nodes involved हैं, but they are fixed and matted. N1 में क्या थे? They were mobile. N2A में we say they are fixed and matted. What is N2B? N2B में we have the ipsilateral internal mammary nodes in the absence of axillary nodes. ठीक है. Axillary nodes involved नहीं है, ipsilateral internal mammary nodes involved है, that is N2B. N3A is when there is ipsilateral infraclavicular lymph nodes involved. Level 3 involved है axillary node.
इप्सिलैटरल इंफ्राक्लैविकुलर N3A, N3B में क्या इन्वॉल्व है? दोनों, internal mammary ipsilateral and ipsilateral axillary lymph node. This is N3B, और N3C में you have ipsilateral supraclavicular lymph node. पुराना जो क्लासिफिकेशन था TNM जो था उसके अंदर इसे हम क्या कंसिडर करते थे? मेटास्टैटिक डिजीज, बट नाउ इप्सिलैटरल सुप्राक्लाविकुलर इज कंसिडर्ड एज N3C डिजीज. हर साल TNM से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट के अंदर बेटा, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस क्लासिफिकेशन. अब हम क्या बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, दैट इज अ मेटास्टैटिक डिजीज if there is no other involvement of the other side of the breast. Other side of the breast अगर involved नहीं है, that is a contralateral disease. Contralateral involvement अगर है lymph node का, that is a metastatic disease. Coming on to the M staging, again M0 is no mets, M1 is distant mets. अब staging important है बेटा. अगर actually staging पूछिए तो you should be knowing what the staging is. Stage 1 हम 1A 1B के फॉर्म में पढ़ते हैं. 1A is when we have T1 N0 M0. 1B important है बेटा, this is the new thing. 1B में हम क्या बोलते हैं? Either it is T0 or T1 along with the presence of microscopic nodal metastasis. तो microscopic nodal metastasis अगर present है, so that is N1 MI, that is along with either T0 or T1, that is your 1B stage. What is 2A? 2A is when you have T0 N1 और T1 T0 से लेके T1 along with N1 involvement and T2. ठीक है, तो that is your stage 2A. Stage 2B क्या है बेटा? T2 N1 या T3 N0, that is stage 2B. Then we talk about stage 3A. अब stage 3A में क्या क्या आता है बेटा? T0 N2 या T1 T0 T1 N2. तो basically T0 से लेके T2 तक अगर स्टेज है along with the involvement of N2, that is 3A. And also if there is T3 along with N1 or N2, that qualifies as 3A. 3B क्या होता है बेटा? When there is T4 और T4 के साथ क्या क्या प्रेजेंट है? N0 से लेके N2 है, that is considered as 3B. And stage 3C में कोई भी T staging हो सकती है अगर N3 है, that is stage 3C. Stage 4 is when we have metastasis that is present, that is stage 4. अब कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि सर दोनों ब्रेस्ट में लीजन्स थे, तो अगर दो ब्रेस्ट में लीजन्स हैं तो हम क्या करेंगे बेटा? सेपरेटली स्टेज करेंगे, दैट इज वन थिंग. सेम ब्रेस्ट में अगर दो लीजन्स हैं तो हम क्या करेंगे? द बिगर डायमेंशन अकॉर्डिंग टू द बिगर मास वी कैलकुलेट द स्टेजिंग. दैट इज व्हाट इज इन्वॉल्व, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम साइज लेते हैं अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट डायमेंशन, हमेशा हम साइज लेते हैं स्टेजिंग में, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू नो हियर. So this was about the question on breast cancer. ध्यान क्या रखना है बेटा? कोई भी इमेज दी हो, अगर ये आपको क्राइटेरिया पता है तो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है. उस इमेज में क्या मेंशन था? अगर केवल अल्सरेशन दिया था, that was T4B. If there was inflammation signs along with the involvement of the entire breast with both your arms, that was again T4D. ठीक है? Okay, this was the question that was again recalled improperly, but basic चीजें इसमें हैं. A 50-year-old patient presents with slow-growing, painless neck mass at the angle of the mandible. On examination, when pressure is applied to the swelling, it empties and then refills when the pressure is released. On angiography, Laird sign is observed. Probably ये line नहीं लिखी थी, directly Laird sign mentioned नहीं था, image दी थी angiography की. That was what the question was. What is the most likely diagnosis? So this is the characteristic image wherein you're seeing the splaying of the carotid artery. What is visible? You can see the splaying of carotid artery, and that is what is a typical feature of carotid body tumor. Chemoductoma का feature होता है. So what all things do you need to remember about chemoductoma बेटा? पहली बात तो ये क्या होता है? 5th decade में common होता है, number 1. Number 2, it is found in people staying at high altitudes. क्यों होता है वहां पे? Because there is hypoxia. Hypoxia leads to what? There is carotid body hyperplasia. So there is hyperplasia of what? The chemoreceptor cells of the carotid body, specifically the medial side. तो carotid wall जो है वो involve होती है, वहां पर जाके आपको मिलेगा. And what happens is when you do a angiogram, आपने जब angiogram करोगे इसका, that is investigation of choice, carotid angiogram, what you will see is there's going to be at the bifurcation of the carotid, that is visible here, you will see the splaying of the carotid. What is splaying of the carotid? That is called as Laird sign. Lair क्या होता है बेटा? It's a musical instrument with strings. तो इस तरह का एक stringed instrument होता है. That is what is the appearance that is visible here. That is what is your diagnostic for carotid body tumor. That is what was asked here. Now again, this is an important feature that has been mentioned here, that when you press upon the carotid tumor, carotid body tumor, it empties
and as soon as you release the pressure, it is slowly refilling. Slow refilling होती है, and the refilling is a pulsatile form में refilling होती है. That is also what is characteristically mentioned. So the answer here was carotid body tube. Let's go to the next question. Okay. A 70-year-old patient presents with rapidly growing hard thyroid mass with vocal cord paralysis and dysphagia. Fine needle aspiration shows highly pleomorphic cells with no specific differentiation markers. What is the most likely diagnosis? Again, there is a controversy in this question. First, I'll answer the question based on what is mentioned here. Then I'll tell you what was probably asked. ठीक है? तो इसमें clear cut mentioned है. Age देखो बेटा, 70 years is the age that is given. That is, age is more than 60 years. That is the first thing. Okay, we have moved on to the next question. Yeah, age is more than 60. It was rapidly growing. ठीक है? It was a hard mass which was involving adjacent structure. इसलिए आपको क्या मिल रहा है? There is vocal cord paralysis and dysphagia. FNAC किया आपने तो आपको क्या मिला? Highly pleomorphic cells, कोई differentiation markers नहीं मिल रहे हैं. So basically it's an undifferentiated cancer. कौन सा? Anaplastic thyroid cancer है. The undifferentiated thyroid cancer which is anaplastic thyroid carcinoma. क्या क्या features मिले आपको? Age more than 60 है. It's a rapidly growing tumor. Medullary नहीं हो सकता. Medullary is a slow growing tumor. ठीक है? तो rapidly growing है. Local invasion show कर रहा है. It's a hard mass and it is showing local invasion involving vocal cord paralysis and dysphagia. This is a characteristic presentation of anaplastic carcinoma. FNAC confirms कोई clear आपको cells नहीं मिल रहे, pleomorphic cells मिल रहे हैं, and there are no differentiation markers. Now the second variant that was asked was that there was presence of amyloid stroma. There was amyloid stroma that was present along with neuroendocrine markers present थे. कौन से? There was synaptophysin and chromogranin. तो दो आपको मार्कर्स दिए थे along with the amyloid stroma, and in that case अगर वो presentation था, so that would be indicating towards the presence of medullary thyroid cancer. ठीक है? So that is what you need to remember. So the next question was, okay, so this 60 year was from the previous question. We'll just knock this off. Okay, so a 25-year-old patient sustained a femur fracture in a road traffic accident. 2 days post-injury, the patient develops sudden onset dyspnea. Sudden onset dyspnea है पहला feature, ठीक है? There is petechial hemorrhages, second feature. Then we have chest. You have petechial hemorrhages in the chest and conjunctiva, and there is drowsiness that can be noted in this patient. तो ये तीन क्या characteristic feature दिए बेटा? Sudden onset respiratory distress. Number 2, you have altered mental status, and third is skin petechiae that is noted. These are the characteristic three presentations of fat embolism syndrome in a patient who has recently sustained a fracture, and that fracture has been repaired or not repaired, doesn't matter, but this is what is the presentation. Why does the fat embolism happen? That is also important. Fat embolism happens because of the leakage of the marrow into the circulation. Leak होके कहाँ पहुँचा? Pulmonary circulation में पहुँचा. वहाँ जाके inflammatory cascade got triggered, platelet dysfunction happened, neutrophil infiltration happened, and therefore there was a embolus which was formed, and that led to all the symptoms as mentioned in the question. Usually presentation from hours to days after the injury किसके साथ ज़्यादा common होता है बेटा? Multiple injuries होंगी तो उनके साथ ज़्यादा common होगा as compared to an isolated fracture. Usually seen with the pelvic fractures as well as femur fractures के साथ usually noted होता है. How can you prevent it? Early fixation is usually thought to be beneficial. Also nowadays we say that corticosteroids are beneficial in these patients of fat embolism syndrome. So this was a straightforward question. There was nothing controversial here. This was a clear question of fat embolism syndrome. Next question. During a complex duodenal surgery, the surgeon accidentally cuts a major vessel posterior to the duodenum. अब बेटा ये duodenum mention था कि नहीं था? Probably here the mention was of epiploic foramen. यहाँ पे epiploic foramen mention किया था उन्होंने. That mentioned about epiploic foramen. अब when there is a direct mention कि posteriorly epiploic foramen जो है that was involved, posterior wall or the posterior aspect of the epiploic foramen पे जो vessel थी वो injure हुई है. So basically the question was asking about the anatomy of epiploic foramen. तो अगर आपको anatomy पता है epiploic foramen की, so you'll be able to understand better. Posteriorly we have inferior vena cava, anteriorly we have the hepatoduodenal ligament जिसके अंदर तीन structures होते हैं बेटा. We have your hepatic artery, you have the portal vein, and you have common bile duct.
Superiorly we have the caudate lobe or the caudate process of liver. Inferiorly we have the first part of duodenum. ठीक है? So here क्या पूछा है? Posterior aspect पूछा है. The answer is going to be inferior vena cava. ठीक है? Okay. तो ये image एक बार देख लोगे आपको तो you'll be able to remember what is the relationship. Look at this image here. Posteriorly हम IVC देख पा रहे हैं. We can appreciate the IVC posteriorly, and anteriorly we can see that in the free margin you have the involvement of or the presence of hepatoduodenal ligament जिसके अंदर आपको portal vein, hepatic artery, common bile duct मिल रही है. ठीक है? So this was more of an anatomy question as compared to a surgery question. Next question. The knot shown in the image is commonly used in surgical procedures. What type of knot is depicted? आपको दिख रहा है बेटा, पहले उसमें दो throws हैं, ऊपर एक throw है. This is characteristic configuration of surgeon's knot. This was what was asked. This is the characteristic presentation of surgeon's knot. ठीक है, straight forward question था, कोई confusion नहीं था इस question के अंदर. Next question. This is how the surgeon knot looks like. ये ग्रैनी नॉट और रीफ नॉट, ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस आपको पता होने चाहिए. दिस आर वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. अगर नॉट्स और सूचर्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. A 35-year-old patient is diagnosed with pheochromocytoma and is scheduled for surgical resection. Pheochromocytoma is a hot favorite topic. इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है. So this was the question this year. During pre-op preparation, which drug is most appropriate for controlling hypertensive episodes and preparing the patient for surgery? अब pheochromocytoma में आपको पता है बेटा कैटेकोलामिन रिलीज होता है, that causes hypertension. अगर आपको हाइपोटेंसिव एपिसोड्स कंट्रोल करने हैं तो आपको इनिशियली क्या देना होता है? प्री ऑप प्रिपरेशन में आपको अल्फा ब्लॉकेड करना होता है. What is the drug used for alpha blockade? We use phenoxybenzamine is the drug that is used for alpha blockade. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं because this is important. Let's not just skim through this topic. Basically हम मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं. प्रीऑपरेटिवली फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर वी गिव द अल्फा ब्लॉकेड इज यूज्ड. अब अल्फा ब्लॉकेड में हम क्या यूज करते हैं बेटा? वी यूज phenoxybenzamine. ठीक है, phenoxybenzamine is used. Initially the dose that is given is 20 milligrams. Slowly we increase the dose daily by 10 milligrams. कितना मैक्सिमम डोज तक बढ़ा सकते हैं? Till we reach 100 to 160 milligrams. अब बढ़ा सकते हैं मतलब वहां तक हमको पहुंचना है. या तो हम ये डोज अटेन कर लें और द पेशेंट स्टार्ट्स शोइंग सिम्टोमैटिक postural hypotension. इन दो में से जो भी चीज होगी वहां पे हम रुक जाएंगे. Now, if the patient develops tachycardia or arrhythmia, we have to add a beta blocker. पहले कभी भी बीटा ब्लॉकर नहीं देना है. We start with the alpha blockade first. ठीक है, ओके. नेक्स्ट थिंग, अगर हमने पहले दे दिया बीटा ब्लॉकर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है. व्हाट हैपेंस? यू गो इनटू वेसोस्पैज्म एंड देयर इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस. नाउ अगर हम बात करते हैं कि अल्फा ब्लॉकर देने से क्या बेनिफिट हुआ है. सो अर्लियर व्हेन अल्फा ब्लॉकेड वाज नॉट यूज्ड एंड द पेशेंट यूज्ड टू बी ऑपरेटेड pheochromocytoma, the mortality was very high. But now, because of the use of alpha blockade, the perioperative mortality has fallen down to less than 3%. So the surgeries for pheochromocytoma are pretty much safe these days. That was not the case earlier. Now, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम adrenal vein को ligate करते हैं तो क्या हो जाता है? The patient goes into sudden hypotension because there is alpha blockade, unopposed alpha blockade हो जाता है. And therefore, what do we need to do to prevent it? We need to give large volumes of IV fluids along with the vasopressors. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, this is also one of the questions that is asked. So this was about the question on pheochromocytoma. Next question. A 35-year-old male presents to the emergency department after sustaining a stab wound to the epigastrium. Very, very important. Penetrating abdominal wounds are the ones which are very, very frequently asked. Okay, let's get back to the question slide first. Stab wound to the epigastrium. On arrival, he is tachycardic, heart rate 128, hypotensive hai, and diaphoretic hai. That means the patient is not stable. It's an unstable patient. Abdominal examination reveals guarding and rigidity. मतलब क्या है? patient को peritonitis मिल रहा है. What is the immediate intervention or procedure of choice for this patient? अब जो patient unstable है, peritonitis पे है, साथ में patient को stab का patient है, कभी भी कोई investigation नहीं होगी. You need to directly rush the patient to operating room and do a laparotomy. So this is a straightforward case wherein an exploratory laparotomy would be needed. There is no time to waste on CT, DPL, fast, nothing doing. Stab patient, unstable, peritonitis, directly go for exploratory laparotomy.
अब इसका एल्गोरिदम आपको पता होना चाहिए क्योंकि पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. सो व्हाट इज द एल्गो फॉर इट बेटा? पेनिट्रेटिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा है जैसा कि इस पेशेंट में था, अलोंग विद शॉक, पेरिटोनाइटिस मिल रहा है, इविसरेशन, इविसरेशन मतलब बाउल लूप्स आपको बाहर दिख रहे हैं, या फिर आपको बाहर बाइल स्टेन फ्लूइड दिख रहा है, मतलब डेफिनेटली परफोरेशन इज हैपेंड. So what do you do if all of these features or any one of these features is positive? We go for exploratory midline laparotomy like this question. But if it's a stab patient or penetrating abdominal trauma, none of these features are present. We wait. We go for local wound exploration. लोकल वुंड एक्सप्लोरेशन में आपको दिखता है या तो पॉजिटिव फाइंडिंग्स है या इक्विवोकल फाइंडिंग्स है, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है. व्हाट यू डू इज यू एडमिट द पेशेंट. ठीक है, इट्स नॉट वेरी क्लियर, आपको लग रहा है हो सकता है कि फेशिया में भी इंजरी हुई हो एंड द इंजरी कैन बी डीपर, सो यू एडमिट द पेशेंट एंड वी गो फॉर serial physical examinations and measure the hemoglobin levels after every 8 hours. अगर इस दौरान पेरिटोनाइटिस डेवलप हो जाता है या फिर पेशेंट बिकम्स हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल, इफ दिस इज ट्रू देन अगेन हमारा प्रोटोकॉल वही है बेटा, वी गो फॉर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी. Then what we do is, if still that is not the case, the patient remains stable but there is drop in the hemoglobin level, मतलब कहीं से पेशेंट ब्लीड कर रहा है या फिर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब धीरे धीरे पेशेंट सेप्सिस में जा रहा है, दोनों चीजें अगर हैं तो इफ देयर इज स्टेबिलिटी, पेशेंट स्टेबल है तो हम सीटी करेंगे, or we can also go for diagnostic peritoneal lavage, but we generally prefer CT and then we go for exploratory laparotomy. अगर नहीं है, पेशेंट स्टेबल बना रहता है, we can discharge the patient and start oral diet. So this is what is the protocol for management of penetrating abdominal trauma. ठीक है बेटा, next question. A 32-year-old male presents with dysphagia and regurgitation. So dysphagia was mentioned, regurgitation was mentioned. A barium swallow image is shown. Which investigation is considered the gold standard for confirming the diagnosis? So basically, ये image थी या नहीं थी doesn't matter. What was shown was probably, along with dysphagia and regurgitation, these are the characteristic features of achalasia cardia, and there was shown a rat tail, bird beak or pencil tip appearance was characteristically shown. What is the gold standard investigation in cases of achalasia cardia or esophageal motility disorders? The answer is going to be high resolution manometry. Whatever was manometry option जो भी था आपके पास, esophageal manometry था, so that would be the answer here. Now there were some students who said that sir ये question option, ये इमेज नहीं थी, इमेज वाज शोइंग esophageal कैंसर, उसमें शोल्डरिंग इफेक्ट भी दिख रहा था. सो इफ इट वाज esophageal कैंसर, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देयर इज एंडोस्कोपिक बायोप्सी. ठीक है, तो ध्यान से इमेज क्या थी, अगर इमेज में कैरेक्टरिस्टिक बर्ड बीक पेंसिल टिप मिल रहा था along with the features of achalasia cardia, the investigation of choice is going to be high resolution manometry. If it was an image which was showing esophageal cancer, the answer is going to be endoscopic biopsy. ठीक है बेटा, okay, next question. A neonate develops severe respiratory distress shortly after birth and is admitted to the ICU. A chest X-ray is provided. What is the most likely diagnosis? क्या दिख रहा है आपको इमेज में बेटा? You can see that the bowel loops have gone right up till the hemithorax. Left hemithorax में आपको bowel loops दिख रहे हैं, herniation हुआ है bowel loops का, इसीलिए बच्चे को क्या है, respiratory distress है. What is this? This is the characteristic presentation of congenital diaphragmatic hernia. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखते हैं बेटा. विच इज द मोस्ट कॉमन वन? बॉक्टेलेक इज द मोस्ट कॉमन वन. कहाँ होता है? बीपीएल से याद रखते हैं हम इसको, पोस्टीरियरली ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज बॉक्टेलेक. और दूसरा कौन सा पढ़ते हैं हम? दूसरा पढ़ते हैं हम बेटा मॉर्गैग्नियन, RAM, दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट एंटीरियर, दैट इज योर मॉर्गैग्नियन हर्निया. अब बॉक्टेलेक में स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मोस्ट कॉमनली वन दैट herniates, and Morgagnian we have the transverse colon that herniates. ठीक है बेटा, okay, so this was about this question. Next question. Based on the Parkes classification, again one of the most favorite questions of the examiner, या तो पाइलोनाइडल साइनस पूछता है बेटा, या फिस्टुला इन एनो, या फिर वो आपसे रेक्टल प्रोलैप्स. तो रेक्टम एंड एनल कैनाल से ये 3-4 क्वेश्चंस जो है वो हर साल घूम घूम के आते रहता है. तो दिस वाज द क्वेश्चन दिस टाइम. दे आस्क्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन. पार्क्स क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन था, पूछा था आपसे कि कौन सा फिस्टुला शो दिखा रहा है इमेज में. So probably this was the first image. Again, there are a lot of students saying whether it was transsphincteric, intersphincteric. So this image that what I've got is a fistula which is present between the external or internal sphincter. ये आपका external sphincter हो गया और ये आपका internal sphincter है. इसके बीच में ये fistulous tract present है. So this was your intersphincteric fistula. ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं बेटा. So this is the marking that you'll understand बेटा. वो external sphincter था. And so this is your external anal sphincter and this is your internal anal sphincter. The fistula was present between both of them. So it was your intersphincteric fistula, which is also the
most common type of fistula. It does not cross the external sphincter. ठीक है बेटा? Similarly, we also have the transsphincteric, which is crossing both the type of fistula, both the type of sphincters, internal external दोनों को cross करता है. That is the transsphincteric. If it is present outside the sphincters, it is extrasphincteric. Usually, it is associated with trauma. And if it is present above the puborectalis, that is what we call as the suprasphincteric fistula. So important classification that you should be knowing. अब फिस्टुला एनानो में एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज गुडसाल्स रूल. गुडसाल्स रूल क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द फिस्टुला इज प्रेजेंट वेयर इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द लाइन, जो ट्रांसवर्स लाइन आपने ड्रॉ करी है अक्रॉस द एनस, इफ इट इज प्रेजेंट एंटीरियर टू द ट्रांसवर्स लाइन विद इन 3 सेंटीमीटर्स ऑफ द एनल वर्ज, अगर प्रेजेंट है तो जो उसकी ओपनिंग होगी, इंटरनल ओपनिंग, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल. रेडियली खुलेगी एंटीरियर वॉल में. बाकी जितने भी होंगे वो कहां खुलेंगे? मिड लाइन पोस्टीरियरली. तो विद इन 3 सेंटीमीटर ऑफ द एनल वर्ज एंटीरियर टू द ट्रांसवर्स लाइन, इट विल ओपन रेडियली इनटू द एंटीरियर वॉल ऑफ द एनल कैनाल. But if you have a posterior or rest of all the fistula, they will open into midline posteriorly. That is the first thing. अब इसका एक एक्सेप्शन होता है बेटा, दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट लॉन्ग एंटीरियर फिस्टुला. मतलब विद इन 3 सेंटीमीटर्स अगर है ऑफ द एनल वर्ज, देन तो इट इज नॉर्मल एंटीरियर. लॉन्ग एंटीरियर मतलब 3 सेंटीमीटर के बियॉन्ड है. सो एक्सटर्नल ओपनिंग व्हिच इज प्रेजेंट 3 सेंटीमीटर, मोर देन 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द एनल वर्ज, दे विल हैव अ कर्व्ड ट्रैक. उसका रेडियल ट्रैक था किसका? नॉर्मल एंटीरियर का. इसका कर्व ट्रैक होगा एंड दे विल ओपन इन द मिड लाइन पोस्टीरियरली लाइक द रेस्ट ऑफ द फिस्टुलास. ठीक है? दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 30-year-old woman sustains circumferential, keyword, circumferential full thickness and deep partial thickness burn on her lower limb. The image shows the procedure performed. What is the procedure? इमेज कोई भी दियो, अगर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन था बेटा, सर्कमफरेंशियल फुल थिकनेस बर्न्स में हम क्या करते हैं? वी गो फॉर एस्कराटमी. क्या हो रहा है? एक टूर्निकेट टाइप का इफेक्ट है. देयर इज अ पूरे ऐसा थिक टिश्यू है विच इज एनक्लोजिंग द लिम्ब एंड द चेस्ट वॉल और टॉर्सो जहां पर भी प्रेजेंट है. अगर आपने उस टिश्यू को रिलीज नहीं किया तो देयर इज गोइंग टू बी वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज. सो वी हैव टू गो फॉर एस्कराटमी इन such cases. That is the procedure of choice if you are having a full thickness circumferential burn. Now there are students who are saying directly, sir ये escarotomy नहीं पूछी थी, उन्होंने इमेज दी थी जिसमें कि incisions लगे हुए थे escarotomy के. उसमें one of the options was that it is done for circumferential full thickness burn, so that is obviously a correct option. ठीक है? अब इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना होगा बेटा. एक बार पूछा है तो इस पे और क्वेश्चंस आएंगे. Group B, or when we talk about the full thickness and deep dermal burns, the procedure of choice that we do is aspiratomy. कहाँ तक काटते हैं? फेशिया तक काटते हैं, जहाँ कि आपको उसके बाद नीचे viable fat दिखना शुरू हो जाए. Done for circumferential full thickness burn. So these images are directly from what I have taught in the app. ऐप में सब डिस्क्रिप्शन, तो आपको एक्चुअली दिखेगा कि about 90% of the questions were discussed in the app. So therefore it becomes easier for the students who have been using the app to correlate with the questions. ठीक है? तो limb और torso पे अगर आपको circumferential full thickness burns हैं तो you have to go for emergency management, otherwise there is going to be a compromise of circulation and respiration. ठीक है? अब इंसिजन साइट भी इंपॉर्टेंट है बेटा. कहां अगर एस्कराटमी हो रही है तो इंसिजन कहां लगाना है? If you're doing an escharotomy in the upper limb, the incision has to be mid-axial. Mid-axial का मतलब है anterior to the elbow. We are trying to save the ulnar nerve here. Vessel नहीं बचा रहे हैं, ulnar nerve बचा रहे हैं upper limb में. Hand में लगा रहे हैं तो midline in the digits, release of the muscle compartments that is needed. If you are putting it in the lower limb, again mid-axial incisions are given. Posterior to the ankle क्या बचा रहे हैं? Long saphenous vein. Anterior to the head of fibula क्या बचा रहे हैं? Common peroneal nerve is being saved here. चेस्ट पे जब देते हैं बेटा, टॉर्सो पे जब इंसिजन लगाते हैं, इट इज लैटरल टू द निपल, राइट डाउन टू द चेस्ट. वी गिव अक्रॉस द चेस्ट, बिलो द क्लैविकल एंड अक्रॉस द चेस्ट एट द लेवल ऑफ ज़िफी स्टर्नम. ये 3 इंसिजन हम यूज करते हैं. Now, why early excision in burns is important? Why we do it as soon as possible? जैसे ही पेशेंट आया तो हम करते हैं, because it uses the concept of the period of the time period of the window concept. क्या क्या चीजें हैं बेटा? हमारे पास 3 विंडोज की हम बात करते हैं. एनेस्थेटिक विंडो, हेमोडायनामिक विंडो एंड द बैक्टीरियल विंडो. अब थोड़ा सा और एलैबोरेटली समझते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट हैपन. जितना जल्दी हम एक्सरसाइज ऑफ करेंगे, बैक्टीरियल लोड उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा. नंबर 1, ऑब्वियसली आप डेड नेक्रोटिक टिश्यू हटाते जाओगे तो बैक्टीरियल लोड कम होगा. दूसरा, आउटकम ऑफ द सर्जरी इज इंप्रूव्ड. अगर लंग इंजरी एक बार सेट इन हो गई तो आप कितना भी एक्सिजन ऑफ कर लो, उसके बाद आपका प्रोग्नोसिस पुअर ही होगा.
तीसरा, इट अलाउज द वेजोकंस्ट्रक्टिव फ्लूइड्स. क्या होता है बेटा, वेजोकंस्ट्रक्टिव फ्लूइड्स की जरूरत होती है, पेशेंट इज इन शॉक, सेप्टिक शॉक में होता है पेशेंट. तो अगर आपकी वेसल्स कंप्रेस्ड है, आप और वेजो कंप्रेसिव फ्लूइड दे रहे हो, कंप्रेस क्यों है, टूरने के लाइक इफेक्ट है, सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन. तो हम पहले उन कंप्रेस्ड इफेक्ट को हटाएंगे एंड नाउ वी कैन यूज वेजो कंस्ट्रक्टिव फ्लूइड्स एज वेल. So this is the important discussion about this question that you should be knowing. ठीक है बेटा? Okay, next question. A 56-year-old man presented with chronic venous changes in the lower limb. अब exactly ये image थी या नहीं थी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर varicosities दिख रही थी. Whatever it was, we'll solve accordingly. Options are pretty clear. Which of the following statement is true regarding this condition? True पूछा है इसमें. स्क्लेरोथेरेपी इज द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट. वैरिकोज वेन्स में स्क्लेरोथेरेपी बहुत पहले यूज होती थी, आजकल तो स्क्लेरोथेरेपी हम यूज नहीं करते हैं बहुत ज्यादा. एंडोथर्मल अब्लेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन, मेनली एंडोथर्मल अब्लेशन इज द प्रोसीजर ऑफ चॉइस. सो स्क्लेरोथेरेपी इज नॉट द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट. Eczema or lipodermatosclerosis can develop, definitely they can develop. ठीक है. Telangiectasia is uncommon. No, it is common. Telangiectasia is not uncommon, it is common. Venous ulcer formation is not expected, it is expected. कौन सी स्टेज होती है CEAP क्लासिफिकेशन की? तो कुछ बच्चों ने बोला सर venous ulcer मेंशन नहीं था, C6 मेंशन था. तो एक ही बात है बेटा, active venous ulcer is your C6 stage according to the CEAP classification. तो CEAP classification भी आपको पता होना चाहिए. अभी तक क्वेश्चन उसमें से आ रहे थे. This time there was a twist in the question. They asked directly about the varicosities, varicose veins के बारे में ट्रीटमेंट पूछा हुआ था. ठीक है. Okay, so this is about the question. Eczema and lipodermatosclerosis can develop or may develop is the correct answer for this question. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन सूचर्स के ऊपर पूछा. रिगार्डिंग द सूचर मटेरियल शोन, क्या दिया था बेटा, पीडीएस सूचर दिया था. पॉलीडायक्सोनॉन वाज गिवन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट? अब आपको तीन चीजें पॉलीडायक्सोनॉन के बारे में पता होना चाहिए. इट इज एन अब्सॉर्बेबल सूचर, इट इज अ मोनोफिलामेंट सूचर, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीएस्टर. ठीक है, पॉलीएस्टर से बनता है. और एब्जॉर्प्शन जो है कितने दिन में हो जाता है, एब्जॉर्बेबल है तो 180 डेज में इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली. ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए. नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं होता, एब्जॉर्बेबल होता है. मोनोफिलामेंट होता है, दैट इज ट्रू एंड दैट वाज द करेक्ट आंसर हियर. ब्रेडेड मल्टीफिलामेंट नो, कोलेजन से नहीं बनता है. कोलेजन से कौन सा बनता है, कौन सा डिराइव होता है, कैटगट इज द वन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन. दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलीएस्टर. So this was a straightforward question. Okay, again, this question is where there was some controversy, not a lot of controversy. A 3-year-old boy is brought with the complaints of painful urination and ballooning of the foreskin during micturition. The image shows the external genitalia. आपको दिख रहा है बेटा, इसमें आपको क्या दिख रही है, बलूनिंग दिख रही है प्रीप्यूस की. यू कैन सी द यूरिनेशन में उसको प्रॉब्लम है और फोरस्किन की बलूनिंग है. What is the likely diagnosis? If this was the picture or somewhat like this along with these symptoms, the answer would be phimosis. ठीक है, फिर तो phimosis clear cut answer है. But there were some students who are saying that there was a white sclerotic ring which was present at the prepuce. अगर यहाँ पे आपको बेटा white sclerotic ring अगर present है, in that cases the answer could be BXO as well. ध्यान रखना, balanitis xerotica obliterans has a thick white sclerotic ring which is present at the tip of the penis, and the answer in that cases will be BXO. अब based on what the image was, आपको आंसर मार्क करना है. I will explain. Yeah. So let's continue discussion on that. We'll be talking about the diseases of foreskin. Mainly बेटा phimosis का discussion करते हैं यहाँ पे. What is phimosis? If you are unable to retract the foreskin, that is what is phimosis. It can be physiological and it can be either true or acquired form. Physiological कब होता है बेटा? When there are adhesions which are present बच्चों में up to 2 से 6 साल तक के बच्चों में जब मिलता है, we talk about it to be a physiological form of phimosis. Now we also talk about the true or the acquired form. Acquired form मतलब अगर boys में हो रहा है, बच्चों में हो रहा है, which are more than 6 years of age. 6 साल से पहले हम बोलते हैं it is physiological. After 6 years we call it to be true or acquired form. There is ballooning of the foreskin during micturition, जो साइन इसमें आपको दिख रहा था, or they can be balanoposthitis as well. In the adults, what is the most common cause of phimosis? It is chronic infection from poor local hygiene. So if there is poor local hygiene, you can have phimosis in the adults as well. What is balanitis? If there is infection of the glans pes, that is balanitis. Posthitis मतलब foreskin का inflammation है. That can also be associated with the phimosis and as well as lichen sclerosis. Now, what are the complications that can happen because of phimosis? That can be balanoposthitis. We just talked about it. They can be hydronephrosis. Hydroureter मतलब urinary obstruction इस level पे हुआ कि back pressure बढ़ते बढ़ते there is hydronephrosis or there is hydroureter. You can have preputial calculi. Obviously urine stasis में चला जाएगा तो preputial calculus बन सकते हैं, and they can also be carcinoma under the foreskin.
Physiological agar hai, so we don't need treatment for it. If it is true phimosis or acquired phimosis, that is where we go for circumcision. But before circumcision, we always try and give a local steroid treatment for 4 to 6 weeks. Emergency situation में अगर आपको catheterization करना है in such patients जहाँ पे phimosis है, so we give an incision, that is dorsal slit is given under local anesthesia. ये question भी एक बार पूछा जा चुका है पहले. Okay, so this is how the picture will be. Now circumcision पे भी बेटा questions आते हैं. What are the contraindications for circumcision? We have to remember in a patient of hypospadias we don't go for circumcision. क्यों नहीं करते हैं hypospadias में circumcision? Because we are trying to save that preputial skin for a graft. अगर आपको urethroplasty करनी है तो उसके लिए आपको use करना पड़ सकता है. Therefore we don't do circumcision in patients of hypospadias. Penile curvature again, that is a feature of hypospadias, and if it's a buried penis we don't go for circumcision. Indications क्या क्या होते हैं बेटा? If mainly we talk about infants or young boys may it as a religious or the social custom, according to that we go for circumcision. Medical indications are important for you to know. इस पे questions आते हैं. If it's a true phimosis, that is when we do it. If it's lichen sclerosis, that is when we do it. Recurrent attacks of balanoposthitis, recurrent UTI along with vesicoureteric reflux. If there is inability to retract the foreskin for intercourse, ये adults की बात कर रहे हैं बेटा. इससे पहले जो पढ़े थे बच्चों वाले थे, adults में क्या क्या indications हैं? अगर foreskin retract नहीं हो रही है, the patient is having problem in intercourse, that is one thing. If there is splitting of or is an abnormal tight frenulum which is present, that is when we do, and in cases of recurrent balanitis. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा, ऑप्शन में आता है लाइन, सर्कमसिजन इज प्रोटेक्टिव फॉर द स्प्रेड ऑफ एचआईवी. एचआईवी के अगेंस्ट एचआईवी का स्प्रेड रोकता है सर्कमसिजन, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. बाय बिकॉज द एचआईवी वायरस डाइज क्विकली ऑन द डेड पेनिस. अगर आपके प्रीप्यूशियल स्किन इंटैक्ट होती है, देयर इज मॉइस्चर व्हिच इज रिटेन्ड एंड दैट इज व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द एचआईवी वायरस. इफ देयर इज अ ड्राई स्किन, ड्राई पेनिस, वी डू नॉट हैव द ग्रोथ ऑफ एचआईवी. देयरफॉर इट इज प्रोटेक्टिव. Post circumcision complications क्या क्या होते हैं, that is also sometimes asked. Most commonly we have hemorrhage that can happen because of the involvement of which vessel? Frenular vessels. We can have infection and chordae formation. This was about phimosis that you needed to know. Next question. A 30-year-old female, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेटा मेल था, I think it was female, presents with a history of recurrent headaches and episodes of nausea. Female है, recurrent episodes है headaches और headache and nausea के. MRI imaging of the brain is provided. What is the most likely underlying condition? क्या दिख रहा है यहाँ पर? Tumor is dura based. Dura based tumor है female के अंदर. What sign is being shown here? We are being shown the dural tail sign. Dural tail sign है. What is this? This is characteristic meningioma. ठीक है, ये important question है. कुछ साल पहले तक ये आता था, बीच में अभी meningioma गायब हो गया था. Once again this question has come up. We need to know important details about meningioma. क्या क्या पता होना चाहिए? Number one, it is the second most common primary intracranial tumor. Females are more likely affected. 2:1 का ratio होता है. It's extraaxial, dural based होता है. This is what is important. Dural tail sign इसमें रहता है. हिस्टोपैथोलॉजी में आपको सैमोमा बॉडीज मिलती हैं. सैमोमा बॉडीज कहाँ कहाँ मिलती हैं, ये आपको सारी जगह पता होनी चाहिए. यू शुड बी नोइंग. पैपिलरी कार्सिनोमा में मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, यू शुड बी नोइंग ऑल लोकेशंस ऑफ सैमोमा बॉडीज. मदर इन लॉ साइन, जब एंजियोग्राफी करते हैं वहां आपको मिलता है मदर इन लॉ साइन. व्हाट इज द थिंग अबाउट मदर इन लॉ? कि जल्दी आ जाती हैं, देर से जाती हैं. द कंट्रास्ट कम्स अर्ली एंड स्टेज टिल लेट. दैट इज व्हाट इज द साइन नोटेड इन मेनिंजियोमा. Treatment is surgery. There is also Simpson's grading for meningioma resection that you should be knowing. This is a grade, higher grade question. अगर पूछेंगे अब, क्योंकि meningioma पूछा है तो Simpson's grading भी पूछी जा सकती है. Grade 1 tumors में we go for complete excision, जहाँ पे हम dura attachment और bone, we go for complete excision. Then we have grade 2 wherein we go for complete excision with the cauterization of the dural attachment. Grade 3 wherein we go for complete excision but we don't go for the dural attachment को नहीं निकालते हैं हम. Grade 4 incomplete resection, and grade 5 is biopsy only. That is your Simpson's grading for meningioma. Next question. Also the last question. A 25-year-old male sustained injuries in a road traffic accident. He was initially conscious but became unresponsive and later died. Autopsy reveals numerous petechial hemorrhages in the corpus callosum. Initially conscious था, became unresponsive and later died. इसमें CT भी normal दिया हुआ था. One more finding was there. CT was normal. Autopsy में numerous petechial hemorrhages were noted in the corpus callosum. Which of the following is the most probable diagnosis?
कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर है किसका? डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का। क्या हो रहा है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में बेटा? क्या होता है? देयर इज shearing injury which happens at the gray and white matter junction. So what is happening here? The patient initially is conscious, but then patient becomes unresponsive or unconscious and dies. NCCT इसमें नॉर्मल होता है, तो DAI is never a diagnosis based on imaging. It's a confirmed diagnosis based only on the autopsy findings. तो अगर आपको autopsy findings दिए हैं किसी एग्जाम के क्वेश्चन में, दैट मींस ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। और क्या हिंट होता है बेटा? सीटी नॉर्मल है पर फिर भी पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, उल्टा डिटोरिएट होता जा रहा है, धीरे धीरे सकम कर जाता है इंजरीज को। सीन आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है? इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर फॉर डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सोनल शियरिंग। रोटेशनल एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हेड इंजरीज में होता है। High velocity injury है, there is shearing force between the gray and the white matter junction. Patient comatose होता है, LOC, that is loss of consciousness which is present more than 6 hours. ठीक है, improvement नहीं होता है GCS में despite as the time passes by, and overall outcome is really poor. काम की चीज क्या है बेटा? NCCT is normal in these patients. Sometimes they can show suggestive features but generally they are normal. हेमोरेजिक फोकाई आपको मिल सकते हैं MRI में। आपको कहाँ दिख सकते हैं? आपको हेमोरेजिक फोकाई कार्पस कैलोसम में और डोर्सोलैटरल ब्रेनस्टेम में आपको दिख सकते हैं। नाउ MRI obviously is more sensitive. We have punctate hemorrhages that can be noted at the gray white matter junction that can be visible. Important चीज, it's strictly a pathological diagnosis. Imaging के बेस पे कभी भी diffuse axonal injury का diagnosis मत बनाना, हम नहीं बनाते हैं। ऑटोप्सी पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं जब हमको तीन कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक फीचर्स मिल सकते हैं। वी फाइंड एक्सोनल रिट्रैक्शन बॉल्स, वी फाइंड माइक्रोग्लायल स्टार्स एंड देयर इज डीजेनरेशन ऑफ व्हाइट मैटर। तीन इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं। अब बेटा एक चीज और पूछी जाती है, दैट इज द क्लिनिकल ग्रेडिंग ऑफ डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। व्हेन डू यू कॉल इट माइल्ड? व्हेन द कोमा remains for 6 to 24 hours. If it has gone beyond 24 hours, it is moderate, and the coma which lasts for a month is a severe diffuse axonal injury. Now, these were the questions which were properly recalled. इसके अलावा कुछ questions थे जिनका proper recall नहीं हुआ है, but probably they were also asked in the examination. One of them was a question on craniopharyngioma, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि suprasellar tumor है, suprasellar cyst है, along with it there was wet keratin palisades were there, that is characteristic craniopharyngioma. Then there was another question which was talking about a tumor which was present in CT image दी थी, जहां पर उन्होंने बोला था लेफ्ट साइडेड पेन है उस पेशेंट को, फ्लैंक पेन है, and that was present just beneath the liver. एक coronal CT दिया था, image was given, probably that is what the students told me, and that was probably a gallbladder tumor. Another question was mentioned, it was 60-year-old male, there was progressive jaundice which was present, and likely this was a presentation of a periampullary carcinoma, most commonly seen in the carcinoma head of pancreas. ठीक है बेटा? So these were roughly the recalls from the paper. What was the takeaway? आपको in depth पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे modules में we have covered almost everything that was asked in the examination, but still I'll say it was not that easy. Though we teach a lot of things for the students to remember and retain everything, it is quite difficult. So yes, you needed to be more precise. The depth of the preparation was needed more. Still call it a moderate to tough paper, tricky paper, and you would need more in-depth studying for these kind of examinations. Do well. अब examination खत्म हो चुके हैं बेटा, just take a deep breath. अब जो भी result आएगा we'll face it. Post the result we'll have a better discussion.